And now I'll start recording. Yes, Atul bhai, you can go ahead, please. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે મદ્રાસ ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન, મરાઠી ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન મંગળવાર મીટના આજના પ્રવચન બ્રહ્મ વિદ્યાની ગૂઢ શાળા બાબતે ભાગ 1 ના વક્તા શ્રી શિંદે સાહેબ, નંદકુમાર રાઉતજી તેમજ શ્રી હર્ષવર્ધનભાઈ શેઠ, આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યો તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી નું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કેશવરબેન કરાવશે. શું થયું? Yeah, go ahead. કેશવરબેન, તમે કરાવશો કે Okay. હું કરાવી દઉં? હું છું એટલે કરાવી દઈશ. हाँ, Yes, कराओ. yes. Go ahead. ઓકે, હા. O hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden Light, light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. Oh, hidden Light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden Love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. No, he is also Shanti, Shanti, Shanti. કેશવરબેન આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્ય માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको. और मैं अपने फोन म्यूट करना भूल गया, आई एम सो सॉरी. तो आज की शुरुआत करते हैं. बहुत ही रोचक विषय है और हमारे जो तीनों वक्ता हैं आज बहुत ही अपने आप में मंझे हुए हैं इस विषय में. तो मैं तीनों वक्ताओं का स्वागत करता हूं. और शिंदे जी, मैं आपसे बहुत आभारी हूं कि आपने ये सब्जेक्ट लेने के लिए एक बीड़ा उठाया और हमें धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं. शायद हमारे प्रश्न आपको बाद में और ज्यादा अच्छी तरह से वो करेंगे. फिलहाल आगे बढ़ते हुए मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगा शिंदे जी का. वे रिटायर्ड में जूलॉजी ऑफिसर की तरह, और वो सांगली में और पुणे में काम करते थे करीब 37 ईयर्स तक. उन्होंने बहुत लगभग 10 किताबें, टेक्स्ट बुक लिखी हैं जूलॉजी में फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. और साथ ही लाइफ मेंबर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के 1975 से. और कंडक्ट किए उन्होंने बहुत सारे सेमिनार, स्कूल ऑफ विजडम के लिए, वर्कर्स ट्रेनिंग कैंप लिए, उन्होंने स्टडी क्लासेस लिए अलग अलग जगहों पर थ्रू आउट इंडिया. नेशनल लेक्चरर तो हैं ही, इंटरनेशनली भी उन्होंने बहुत सारी सभाएं ली हैं. और उनके आर्टिकल्स थियोसॉफी के लगभग सारी मैगजीनों में छपे हुए हैं, जैसे कि थियोसॉफिस्ट हो गया, वेकअप इंडिया हो गया, उसके अलावा इंडियन थियोसॉफिस्ट हुआ, और बहुत सारे फेडरेशन के जनरल में भी, मराठी फेडरेशन में भी वो काफी सक्रिय हैं. बहुत सारे शॉर्ट टॉक दिए हैं. त्रिवेणी पर भी हम लोग बहुत आभारी हैं कि लगातार उनकी उपस्थिति रहती है. और उन्होंने बहुत सारी उन्होंने एक द वॉच टावर आर्टिकल्स दादा बर्नियर जी के थे, वो भी उन्होंने कंपाइलेशन किया हुआ है. और साथ ही इंटरनेशनल स्पीकर की तरह उन्होंने श्रीलंका और कोरोना भी विजिट किया हुआ है. तो हम आपके बहुत आभारी हैं शिंदे जी. प्लीज आज के विषय पर आगे बढ़िए इंग्लिश में. धन्यवाद. Good evening and namaste to everybody. And I am very grateful to Taral Munshi, especially to arrange such lecture, online talk actually. And it is good to know about the esoteric school of theosophy. First, I am welcoming
all the translators, Brother N.N. RAUT and Brother HARSHAVADAN SHETH. They are translating in Hindi and Marathi. We are going very slowly. Let us pray first to our Guru. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Guruve Namah. The topic itself is about the esoteric school of theosophy. Well, this esoteric school of theosophy is abbreviated as EST. And there is misunderstanding about this school. The misunderstanding is it is secret. It is not at all secret. It is private because serious members are selected and admitted in this school, and therefore it becomes private in this sense. So it is not at all secret. Secrecy is there because unnecessarily, if a person is not believing in theosophy or not believing in the universal brotherhood, it is not good to argue with such people. And therefore, it is better to have harmony in our group. We conduct such meetings, etc., privately, seriously, harmoniously. So this is the first misunderstanding of about the esoteric school of theosophy. It is not at all secret, but it is private. You can discuss with the members of the ES, and they will give you whatever is to be needed for a new member. Even when new admissions are taken place during the international convention at Adair in the headquarters, usually international president used to give talk, that is admission, and also gives talk on it. And the new members of the Theosophical Society, they receive a letter from the international president, and that letter itself includes that there is an esoteric school of theosophy, abbreviated as EST. And its administration, or we can say it is administrated separately from the Theosophical Society. Of course, it is open to theosophical members, but after 2 years of active membership in the lodge or in the federation, in the Theosophical Society. And this active membership is not enough, but there has to be willingness to join, who are really willing to able or to abide by some basic conditions directed towards a life of sincere altruism and harmless living. So each words are important. Who are sincere, willing to live an altruistic life, and observe harmlessness. That is harmless living. The school was originally founded by H.P. Blavatsky in the year 1888, and it is based on the principle of Raja Yoga. We know Raja Yoga, there are many yoga we study, like Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, and the fourth one is the Raja Yoga. Raja Yoga is the kingly yoga, because
all these yogas, they merge into the Raja Yoga. You know, it is how it is important. Jnana Yoga gives right direction to our thought. Bhakti Yoga increases the quality of our thought. And Karma Yoga increases our good thoughts. That means negative thoughts are omitted and good thoughts are added through Karma Yoga. So all these Karma Yoga, Jnana Yoga and Bhakti Yoga, these are the ways, way of knowledge, way of action, and way of devotion. So through these three wave, or you can say these three paths, all they unite finally into this Raja Yoga. So it is based on the principle of Raja Yoga. And this esoteric school of Theosophy provides such a path for living a theosophic life. You have already studied the book Theosophic Life, small booklet by Annie Besant, very nicely explained. So this esoteric school of Theosophy gives a path for living a theosophic life. But how? Through the study of divine wisdom. But through its mainly, not merely study, but understanding, assimilating, and practice. So when you study the Theosophy, which is the divine wisdom, you have to reflect and try to understand, assimilate the truth that you have sought by practicing in your daily life. Its members voluntarily undertake the work required in preparing for this kind of ES life or spiritual life. A spirit of harmony with all is very important. You must be the person who can bring peace and harmony all around. So a spirit of harmony with all is emphasized within this school. As well as the ES member must support for the Theosophical Society and its activities in the lodge, in the federation, in the sections, or in the international headquarters. Besides this, he must support the activities which are allied to the Theosophical Society, like Theosophical Order of Service, Mystic Star rituals, Masonic rituals, and many more Egyptian rituals are there. He can support all this. The ES is not a, as I said, secret body, although it conducts its activities in privacy. Therefore, this brochure, we have brought this brochure, whatever I am giving you now, we have brought this brochure to tell to the public so that they can be rightly directed towards such kind of right living. So this brochure is intended to help members of the Theosophical Society to understand more about the school. When we say school, it is definitely a training to the human mind to be quiet, which is already restless and mostly selfish. Therefore, the ES was initially known as Esoteric section. Esoteric section of the Theosophical Society. Later on,
Madam Blavatsky, HPB we call her, subsequently modified the name of this school, and it was then called the Eastern School of Theosophy. It is again Eastern because Westerns were very much eager to know what the Eastern's philosophy is. And therefore, this private school then renamed as the Eastern School of Theosophy. And when Annie Besant became the successor of the H.P. Blavatsky in 1891, when she became the next outer head. See, there is a outer head means immediately opposite to it, there will be inner head. So inner head are invisible and outer head is visible, directly in contact with us. So Eastern School of Theosophy, Mrs. Annie Besant became the next outer head of the worldwide body. After her move to India in 1893, she changed the name to Esoteric School of Theosophy, which has remained until this day. As I said, outer head of this school are usually lifelong. Only he can appoint his successor, or he can take somebody to assist him. But this post of outer head is lifelong. Since Madam Blavatsky's death, when Annie Besant been succeeded in this office in 1891, and she worked till her death in 1933. So she was about 42 years the head of this school. Then C.W. Leadbeater was only for 1 year when Annie Besant passed away. Then immediately C. Jinras Das became the successor in 1934. He worked for 19 years and then he gave it to N. Sriram in 1953. N. Sriram was the outer head right from for about 20 years. And when he fell ill, then he gave it to Brother I.K. Taimini in 1973. I.K. Taimini worked for 6 years and he went back to Allahabad. Then Radha Bernier took it from 1978. And Radha Bernier worked very sincerely for 33 years. And she was very strict, very serious, and followed all the discipline of the Esoteric School of Theosophy, which we witness, because we joined when Radha Bernier was there as the outer head. So Linda Olivera, after the death of Radha Bernier, she became the outer head now. And last 12 years, she has been looking after this school. The ES is constitutionally definitely independent of the Theosophical Society. It is a separate registered body, and there are officers like secretary, which become the president. Then there will be a secretary, treasurer, and it is a registered society. All general body meetings are held and reports are given to the Tamil Nadu government. So the ES is
constitutionally independent of the Theosophical Society. And it exists in various countries. Members of the school come from different background. About 35,000 members are there. Colonel Alcott, the president founder of the TS, announced to the members of the formation of this ES in 1888. This is in 1888 October. It is Colonel H.S. Alcott who announced this formation of the ES school. That means both TS and ES. TS means Theosophical Society, ES Esoteric School of Theosophy. They were going very harmoniously, hand in hand, helping to each other. Colonel Alcott indicated that it is mainly to promote the esoteric interest of Theosophical Society by deeper study of esoteric philosophy. Further, the preliminary memorandum, where it is written in 1888 by Madame Blavatsky, it gives some important historical context. Because in this memorandum, she writes, the object of the Esoteric School of Theosophy is to help the future growth of the Theosophical Society as a whole in the true direction by promoting brotherly union, at least among the few. See, this is very important. Because in memorandum itself, why this group is separated? There has to be a harmonious group. They must be serious. They must form real practical brotherhood, and they form the nucleus of the universal brotherhood. So that some people who are pure in heart, true in wisdom, noble in their thought, and they observe always humility, silent. So the Theosophical Society has just entered upon the 14th year in 1888. 14th years means 772 slots. After each 7 years, there is tremendous change, not only in human body, but also the society. Because this Theosophical Society is not a dead, it is a living organism. And therefore, from each 7 years, there are changes. And if it has accomplished great, the HPB writes in memorandum, if within these 14 years, if it has accomplished a great on the material plane, because within 14 years, lot of Theosophical Society lodges were formed, sections were formed all over the world, and it spread mystically actually. It is all amazing. And therefore HPB in memorandum writes, even if it is on the exoteric and utilitarian plane, it has developed, but it has proved a dead failure on all those points which rank foremost among the objects of the original establishment. So, HPB, who was the founder of the EST, was not happy even after 14 years. She saw there is a exoteric growth, but there is no what is needed actually to form the self-realization and spiritual transformation is not taking place. And therefore, she was instructed by the inner head to gather like-minded people, like-hearted people together, privately work on it seriously, so that the grace or help can come and we can form a channel. So at that time, HPB declared that
masters considered this fledglings. What is this fledgling? Fledglings means these are the hatchlings. So the chickens, they hatch out of the egg. And this condition is like an orphan condition, underdeveloped, unexperienced. And therefore, HPB, right, at that time, HPB declared that masters consider these hatchlings of TS to be failing in regard to brotherhood, which was a fundamental reason for the society's existence. While the original intent of the ES is the same today, there are also some differences. So we have not achieved yet what is to be achieved. It is just like it is helping through individual regeneration to the total human regeneration. But we have not achieved that aim yet. An opportunity is offered to the earnest and sincere students with two conditions. Number one, he must spend some 2 years of active membership in lodges, federations, in the Theosophical Society. And then he can make application to esoteric school. That is one condition. And then after joining its members, its members continue to support the TS in many ways. And the ES member is always active member, good standing member in the Theosophical lodges, federations, and sections. Although the school is organized and administered separately from the Theosophical Society, there is a unique relationship between the two organizations, ES and TS. It is said ES is the heart of the TS. This is because each one benefits from the existence of the other. Members of the school must be engaged, and they are active members of the TS in order to join the ES. That is the first condition. If you are active member, then you will be invited to admit in the or join the esoteric school. Therefore, the functioning of the school depends on the existence of the TS. So the only TS member can become the ES member. If the TS member is cancelled, then he cannot remain the ES member. In turn, members of the ES contribute to the life of the Theosophical Society always. It is interesting to note that Madam Blavatsky, who founded the ES, was also a principal co-founder of the TS. She was the ES head as well as the co-founder of the Theosophical Society. The ES was founded to help strengthen the spiritual life of the TS. Members of the esoteric school have actively supported the society since its inception in 1888 through to our time. Up to date, they are supporting. HPB founded the ES at the best of those spiritual teachers who also inspired the founding of the TS. Taralji, I will stop here. It is 20 minutes. Whatever I have said, it will be translated in Hindi and Marathi now by our brother RAUT and HARSHAVADAN. Thank you, sir. And Rautji, can you just put on your video? Yes. Yeah. Hi. I can't find it. Top mein hai top. हाँ मिल गया. Okay, sir.
And thank you, Shindeji. We'll come back for the English version in part 2. A short introduction of RAUT ji. NANDKUMAR RAUT ji is B from Civil from College of Engineering, Pune. Retired from service in 2015 from Dr. Punjab Rao Deshmukh Agriculture University in Akola. He is a very active member of TS, no doubt about that. Obtained membership of Akola Lodge in 1st December 1997. Treasurer, he was of the same lodge, Akola Lodge, from 2008 to 2016, and president of Akola from 2016 to 2019. Marathi Federation president from 2016 to 2019 also. And he has been national lecturer and also an international since 2019. Please go ahead, NANDKUMAR RAUT ji, in Marathi. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Taral ji. Yes, sir. Welcome. आज आपण इसोटेरिक स्कूल या थिओसॉफीतील जी वेगळी स्कूल आहे त्याच्याबद्दल शिंदे सरांकडून अगदी खूप तपशीलवार आणि चांगल्या पद्धतीचं आपल्याला त्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि स्कूल बद्दल जे गैरसमज आहेत ते बऱ्याच अंशी आता निवळले असतीलच. ऑडियन्स जेवढे आहेत तेवढ्यांना तरी माहित असेल की थिओसॉफिकल सोसायटी कशासाठी आहे, कशा करता आहे. तर सुरुवात करतो मी पहिल्या भागाला. थिओसॉफिकल सोसायटीच्या नवीन सदस्यांना जे नवीन झालेले आहेत त्यांना आंतरराष्ट्रीय अध्यक्षांकडून एक पत्र प्राप्त होत असते आणि ज्यामध्ये त्या पत्रामध्ये या पुरवणीचा किंवा ह्या ईएसचा हा उल्लेख असतो. तो असा की एक इसोटेरिक स्कूल ऑफ थिओसॉफी आहे म्हणजे ईएस आहे जी थिओसॉफिकल सोसायटी पासून स्वतंत्रपणे इंडिपेंडेंटली प्रशासित केली जाते, ऍडमिनिस्ट्रेशन केलं जातं तिचं आणि ती थिओसॉफिकल सोसायटीच्या सदस्यांसाठी खुली आहे. पण अशा सदस्यांसाठी खुली आहे जे सदस्य 2 वर्षाच्या सक्रिय सदस्यत्वानंतर आणि जे प्रामाणिकपणे परोपकारासहित आणि निरुपद्रवी जीवनाच्या इच्छेने निर्देशित केलेल्या काही मूलभूत अटींचे पालन करण्यास इच्छुक आहे अशाच सदस्यांना या इसोटेरिक स्कूल मध्ये आपण प्रवेश दिला जातो. या शाळेची स्थापना म्हणजे या स्कूलची स्थापना मुळातच HPBंनी 1888 साली केली होती आणि ती राजयोगांच्या प्रिन्सिपल्सवर, राजयोगांच्या तत्वावर आधारित आहे. ईएस थिओसॉफिकल जीवन जगण्यासाठी एक मार्ग, एक मोठा आयाम, एक मोठा पाथ हा प्रदान करते जीवनाचा. तो कसा, तर केवळ दैवी ज्ञानाच्या अभ्यासाद्वारे नाही तर त्या ज्ञानाच्या समजुतीतून म्हणजे त्याची समज निर्माण करून त्या ज्ञानाची अंडरस्टँडिंग निर्माण करून आणि ते दैवी ज्ञान ग्रहण करून आत्मसात करून आणि त्याचा सराव करून अशा पद्धतीने सराव करणे, अशा पद्धतीने ती एक जीवन जगण्यासाठी एक मोठा मार्ग प्रदान करते. त्याचे सदस्य थिओसॉफिकल इसोटेरिक स्कूलचे सदस्य आध्यात्मिक मार्गाच्या तयारीसाठी आवश्यक असलेले कार्य स्वेच्छेने करत असतात आणि शाळांमध्ये सर्वांशी सामंजस्याने भावनेने भर दिला जातो. या शाळेमध्ये सामंजस्य, हार्मनी, या भावनेवर विशेष जोर दिला जातो आणि तसेच थिओसॉफिकल सोसायटी आणि तिचे जे काही उपक्रम असतील होत असतील लॉजमध्ये, फेडरेशन मध्ये तर त्यांचे समर्थन करतात
आणि त्यांना सपोर्ट करतात, त्यांना आधार देतात आणि त्यामध्ये स्वतः सुद्धा सक्रिय पद्धतीने भाग घेतात. आता ES संस्था ही काही गुप्त नाही आहे असं समजल्या जाते. त्यावर शिंदे सरांनी चांगलं मार्गदर्शन केलेलं आहे. जरी इतर तत्सम शाळाप्रमाणे ती आहे, ती खाजगीरित्या त्याचे उपक्रम राबवते प्रायव्हेटली. आणि हे माहिती पत्रक थिओसॉफिकल सोसायटीच्या सदस्यांना या शाळेबद्दल अधिक समजून घेण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने तयार केल्या किंवा लिहिलेला आहे. इसोटेरिक स्कूल सुरुवातीला थिओसॉफिकल सोसायटीचे गूढ विभाग म्हणून ओळखले जात होते. पण मॅडम ब्लॅवर्ट्स्की यांनी नंतर 1891 मध्ये त्याचे नाव बदलले आणि द ईस्टर्न स्कूल ऑफ थिओसॉफी असं नाव केलं. पुढे मॅडम ब्लॅवर्ट्स्कीच्या निर्माणानंतर श्रीमती ॲनी बेझंट ह्या इसोटेरिक स्कूलच्या या जागतिक संस्थेच्या पुढील बाह्य प्रमुख बनल्या, म्हणजे आउटर हेड झाल्या. त्या 1893 मध्ये भारतात गेल्यानंतर त्यांनी या संस्थेचे नाव बदलून दी इसोटेरिक स्कूल ऑफ थिओसॉफी असं ठेवलं आणि ते तेव्हापासून आजपर्यंत आजतागायत ते कायम नाव आहे. मॅडम ब्लॅवर्ट्स्कींच्या मृत्यूनंतर पुढे या शाळेचे जे बाह्य प्रमुख झाले आजपर्यंत ते खालील प्रमाणे आहेत. ॲनी बेझंट 1891 मध्ये झाल्या. त्यांच्यानंतर CW लेडबीटर 1933 साली बाह्य प्रमुख झाले. त्यांच्यानंतर C जिनराज दासा हे बाह्य प्रमुख झाले 1934 मध्ये. N श्रीराम म्हणजे आपल्या राधा बर्नियर, पूज्य राधा बर्नियर यांचे वडील N श्रीराम हे 1953 मध्ये बाह्य प्रमुख. IK तैमिनी त्यानंतर 1973 मध्ये IK तैमिनी बाह्य प्रमुख झाले, आउटर हेड. त्यानंतर 1978 मध्ये पूज्य राधा बर्नियर ह्या झाल्या 1978 मध्ये आउटर हेड. आणि नंतर त्यांच्या निर्माणानंतर आताच्या बाह्य प्रमुख लिंडा ऑलिव्हेरा ह्या 2000 तेव्हापासून आतापर्यंत आहेत. इसोटेरिक स्कूल ही थिओसॉफिकल सोसायटी पासून घटनात्मक दृष्ट्या स्वतंत्र आहे, इंडिपेंडंट आहे आणि विविध देशांमध्ये ती अस्तित्वात आहे. म्हणजे इसोटेरिक स्कूलचे जे विभाग आहेत ते सर्व जगामध्ये आहेत आणि या शाळेचे सदस्य जगाच्या वेगवेगळ्या भागातून तसेच वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंड मधून, वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीमधून आलेले आहेत. TS चे जे संस्थापक होते, अध्यक्ष संस्थापक कर्नल अल्कॉट यांनी सदस्यांना ES च्या स्थापनेची घोषणा केली. त्यांनी थिओसॉफीच्या सदस्यांचे ना ES च्या स्थापनेसाठी ऑक्टोबर 1888 मध्ये त्यांनी त्या लोकांना माहित करून दिलं. 1888 मध्ये ES ची म्हणजे स्थापना केली आणि त्यांनी सूचित केलं की ही गूढ शाळा म्हणजे इसोटेरिक स्कूल ही तत्वज्ञानाचा सखोल अभ्यास करून थिओसॉफिकल सोसायटीच्या गूढ म्हणजे मिस्टिक हित संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. म्हणजे ही थिओसॉफिकल इसोटेरिक स्कूल ही कशी आहे की गूढ तत्वज्ञानाचा अभ्यास करून थिओसॉफिकल सोसायटीचे जे गूढ हितसंबंध आहेत त्यांना प्रोत्साहन देणे याकरता ही इसोटेरिक स्कूल स्थापन करण्यात. पुढे 1888 मध्ये मॅडम ब्लॅवर्ट्स्की यांनी लिहिलेले प्राथमिक स्मरणपत्र काही ऐतिहासिक संदर्भ देते. त्यांनी असं म्हटलं आहे की 14व्या वर्षामध्ये
जरी थिओसॉफिकल सोसायटी भौतिकदृष्ट्या समृद्ध झाली आणि काही चमत्कारिक परिणाम घडून आले पाहिजे आणि काही उपयुक्ततावादी असे प्रकार झाले, तरी तिचा मूळ उद्देश होतो त्या मूळ स्थापनेच्या उद्देशांमध्ये जो अग्रगण्य होतो उद्देश, त्या सर्व मुद्द्यावर ती अपयशी ठरली. म्हणून या विभागाचा म्हणजे एसोटेरिक स्कूलचा उद्देश थिओसॉफिकल सोसायटीच्या भविष्यातील वाढीस खऱ्या दिशेने मदत करणे आणि किमान काही लोकांमध्ये बंधुभाव वाढीस लावणे किंवा बंधुभाव वाढवणे हा त्या एसोटेरिक स्कूलचा उद्देश आहे. पुढे HPBंनी असे घोषित केले की महात्म्यांनी असं म्हटलं की नवीन थिओसॉफिकल सोसायटी बंधुत्वाच्या ब्रदरहुडच्या बाबतीत अयशस्वी झाली आणि जे थिओसॉफिकल सोसायटीच्या अस्तित्वाचंच मूलभूत कारण बंधुभाव आणि ईएसचा मूळ हेतू आजही तोच आहे आणि काही किरकोळ फरक आहेत, पण तो हेतू मूळ उद्देश हा त्यावेळेस तो पूर्ण झाला नाही. म्हणून इसोटेरिक स्कूलची स्थापना करण्यात आली. थिओसॉफिकल सोसायटीमध्ये 2 वर्षाच्या सक्रिय सदस्यत्वानंतर उत्सुक आणि प्रामाणिक सदस्याला किंवा विद्यार्थ्याला एसोटेरिक स्कूलमध्ये अर्ज करण्याची संधी दिली जाते. त्यामध्ये सामील झाल्यानंतर ईएस मध्ये सामील झाल्यानंतर तिचे सदस्य टीएसला, थिओसॉफिकल सोसायटीला किंवा थिओसॉफिकल सोसायटीच्या लॉजच्या कार्यामध्ये अनेक मार्गाने समर्थन देत असतात किंवा देतात आणि असे करण्यास सक्रियपणे त्यांना प्रोत्साहन सुद्धा दिले जाते. जरी ही शाळा थिओसॉफिकल सोसायटी पासून स्वतंत्रपणे आयोजित आणि प्रशासित केली जात असली तरी 2 संस्थांमध्ये एक अद्वितीय संबंध आहे, कारण प्रत्येकाला दुसऱ्याच्या अस्तित्वाचा फायदा होतो. एसोटेरिक स्कूलचा फायदा थिओसॉफीला होतो, थिओसॉफीचा फायदा एसोटेरिक स्कूलला होतो. म्हणजे ते एकमेकाशी कॉम्प्लिमेंटरी आहे आणि दोघांच्याही अस्तित्वाचा एकमेकाला फायदा होतो. म्हणून ईएस मध्ये पहिल्यांदा सामील होण्यासाठी या शाळेचे सदस्य हे व्यस्त असले पाहिजे. थिओसॉफिकल सोसायटीचे सक्रिय सदस्य असले पाहिजे. त्यामुळे शाळेचे कामकाज थिओसॉफिकलच्या अस्तित्वावर अवलंबून राहू शकते आणि यामधूनच ईएसचे सदस्य थिओसॉफिकल सोसायटीच्या लॉजच्या, फेडरेशनच्या, सोसायटीच्या जीवनात हे योगदान देतात. आता एक मनोरंजक गोष्ट अशी लक्षात ठेवण्यालायक आहे की इसोटेरिक स्कूलची स्थापना करणाऱ्या मॅडम ब्लॅवट्स्की ह्या टीएसच्या देखील प्रमुख सहसंस्थापक होत्या, को फाउंडर होत्या त्या. आणि ईएसची स्थापना टीएसचे आध्यात्मिक जीवन बळकट करण्यासाठी करण्यात आली. म्हणून पुष्कळ ठिकाणी असं पाहण्यात येते की थिओसॉफिकल लॉज हा इसोटेरिक स्कूलचे मेंबर लोक चांगल्या पद्धतीने चालवू शकतात. इसोटेरिक स्कूलच्या सदस्यांनी 1888 मध्ये संस्थेच्या स्थापनेपासून ते आजच्या काळापर्यंत सक्रियपणे पाठिंबा दिलेला. म्हणजे एसोटेरिक स्कूलचे जे सदस्य आहेत त्यांनी सक्रियपणे थिओसॉफिकल सोसायटीच्या कार्यात आजपर्यंत अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सक्रियपणे पाठिंबा दिलेला आहे, कार्यात सहभाग घेतलेला.
HPBनी ESची स्थापना या आध्यात्मिक शिक्षकांच्या म्हणजे महात्म्यांच्या सांगण्यावरून केली व त्यांनी THची स्थापना करण्यासाठी सुद्धा प्रोत्साहित केले होते तत्कालीन फाउंडर्स लोकांना. तर आजचा आपला पहिला भाग आपण इथे संपवतो आहे. थँक्यू, धन्यवाद. थैंक यू नंदकुमार जी, बिल्कुल सटीक एकदम करेक्ट टाइम में किया. हर्षवर्धन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है. एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा. वे BA हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में और MA है विथ एंटायर इंग्लिश. B.Ed उन्होंने किया है इंग्लिश एंड ज्योग्राफी में. इंग्लिश टीचर की तरह वो एक ग्रामीण इलाके में 7 साल तक सक्रिय रहे और फिर 32 साल तक श्री विद्यानगर हाई स्कूल अहमदाबाद के वो प्रिंसिपल रहे. क्लास में और उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल की तरह उसी स्कूल में कार्य किया और रिटायर हुए 2011 में. कोऑर्डिनेटर थे वो. SSC बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट के सारे पेपर्स वे सेट किया करते थे और वो 1-2 नहीं पूरे 10 साल तक कोऑर्डिनेटर थे. SSC एग्जाम्स के असेसमेंट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट वो किया करते थे. हमेशा मुस्कुराते रहने वाले हैं और थियोसॉफी एक्टिविटी में बहुत ही सक्रिय हैं. अहमदाबाद लॉज में जुड़े 1972 से, सेक्रेटरी की तरह काम किया 76 से 1980 तक. 86 में उन्होंने रोहित लॉज ज्वाइन की, वहां भी वो प्रेसिडेंट रहे और रोहित लॉज के प्रेसिडेंट वो वापस पूरे 25 साल तक रहे. उन्हें गोल्डन जुबली और उनको सिल्वर जुबली बनाने की आदत है, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो या कोई पद हो. और उसी तरह से काम करते करते वो एक लॉज के कॉमन मेंबर की तरह लेकिन बहुत जिम्मेदार व्यक्ति की तरह वे कार्य करते हैं. उनके आसपास के लोग उनके कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं. गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन को उन्होंने बहुत विभिन्न तरीके से किया है. वे वाइस प्रेसिडेंट तो रहे ही GTF के 2011 तक, पर इस वक्त वो प्रेसिडेंट है गुजरात फेडरेशन. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी. आपका पसंद का विषय है, प्लीज आगे बढ़िए. थैंक यू. नमस्कार. खास इस बहुत रोचक विषय पर और मेरे जहन में कई सालों से ये प्रश्न था जो शिंदे जी को मैंने बार बार बताया था कि ES के बारे में लोगों को जानना चाहिए जी. और वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां हम उसकी खुलकर बात कर सकें जी. और आज ये मौका आ गया और शिंदे जी का मैं आभारी रहूंगा कि उन्होंने आज इस त्रिवेणी में इसको पसंद किया और मुझे हिंदी में इसको प्रस्तुत करने के लिए आपने मुझे मौका दिया. अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख के नाते टीम बॉयड ने एक नए सदस्यों को एक पत्र लिखा है जो इस प्रकार है. थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक गूढ़ ज्ञान की रहस्यशाला है जिसका संचालन थियोसॉफिकल सोसाइटी अलग प्रकार से करती है. इस विद्यालय में थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो सदस्य है वे अपनी सदस्यता की 2 साल की अवधि के बाद उसमें प्रवेश पा सकते हैं. उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता है जो कि भ्रातृभाव और संपूर्ण निर्दोष जीवन के लिए प्रेरित करते हैं. मूलतः इस रहस्य स्कूल की स्थापना मैडम HP ब्लेवेट्स्की ने सन 1888 में की थी. यह राजयोग के सिद्धांतों पर आधारित है और यह रहस्यशाला जो ES के नाम से हम प्रचलित कोई ऐसा नाम जो है जिसे हम ब्रह्मविद जीवन की जो द्योतक है उसे न सिर्फ दैवी प्रज्ञा के अभ्यास द्वारा वरन उससे प्राप्त हुई समझदारी और उसी प्रकार जीवन बोध को आत्मसात करना है. उसके सदस्य अपने आध्यात्मिक पथ को अपने आप ही उजागर करते हैं. इस गुड विद्यालय में सामंजस्य को अपनाकर सदस्य थियोसॉफिकल सोसाइटी और उसकी प्रवृत्तियों को विशेष रूप से अनुमोदित करते हैं.
वैसे तो ईएस कोई रहस्य संस्था नहीं है, जैसे सदियों से ऐसे कुछ स्कूल कार्यरत हैं। इस शाला की प्रवृत्तियां निजी रूप से होती है। यह विवरण पत्र का के सदस्यों को इस गुड विद्यालय के बारे में समझाता है, ज्यादा जानकारी उसे देता है। मूलतः ईएस की पहचान एसोटेरिक सेक्शन ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी की तहत होती थी। अब समय रहते क्या हुआ कि मैडम ब्लेवेट्स्की ने सन 1891 में द ईस्टर्न स्कूल ऑफ थियोसॉफी रखा। उसके बाद दुनिया भर में इसी संस्था के आउटर हेड यानी बाह्य नेता डॉक्टर एनी बेसेंट बने, क्योंकि हम जानते हैं कि 1891 में हमारे एचपी भी इस संसार को छोड़कर चली गई। और उसके बाद डॉक्टर बेसेंट ने इसका सुकान संभाला, और हिंदुस्तान में आने के बाद यानी सन थी 1893, उन्होंने इसका नाम रखा द एसोटेरिक स्कूल ऑफ थियोसॉफी, यानी ब्रह्म विद्या की गूढ़शाला। यह नाम आज तक चल रहा है। मैडम ब्लेवेट्स्की ने 1891 में देहांत के बाद जो भी इसके बाह्य नेता इस पद को वहन कर रहे थे, उसमें हम जानते हैं कि डॉक्टर बेसेंट ने 1891 से लेकर 1932 तक ये संभाला। उसके बाद लेडबीटर साहब ने 1933 से लेकर एक साल तक यानी 1934 तक उसे संभाला। बाह्य नेता के तौर पर श्री जिनराज दास जी आए 1934 में, तो वे रहे काफी साल तक यानी 1953 तक, जब एनसी राम बने। और उसके बाद 1973 यानी एनसी राम भी काफी समय रहे इसके आउटर हेड। तो 1973 में आई के तैमीनी जी आए और 5 साल उन्होंने काम किया। उसके बाद राधा बनियर जी 1978 में इसकी आउटर हेड थी। और उसके बाद हम जानते हैं कि उनके निधन के बाद लिंडा ओलिवेरा जी 2013 से अब तक उसके आउटर हेड पर ये कार्यरत है। इसे जानना जरूरी है। अब और एक बात शिंदे जी ने बड़े ही अपने तरीके से समझाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि समय रहते मैं इसमें काफी आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इसमें जो बातें दी गई उस पर काफी ध्यान आपका मैं यहाँ पर इस तरह से लाऊंगा कि गुड विद्याशाला स्वतंत्र रूप से कई देशों में कार्यरत है। इसके सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापक प्रमुख कर्नल ऑलकॉट ने सन 1888 में ईएस की सभ्यों में घोषणा की। उन्होंने बताया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के गहन उद्देश्य की पूर्ति के लिए गूढ़ तत्व ज्ञान का गहरा अध्ययन अनिवार्य है। ये इनके शब्द है, काफी हमें ध्यान में लेना चाहिए। फिर सन 1988 में मैडम ब्लेवेट्स्की द्वारा लिखित प्रिलिमिनरी मेमोरेंडम में इसके ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया गया है। उसमें बताते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुए 14 साल बीते हैं, यानी उन्होंने 1988 में ये बताया, सॉरी 1888, और 14 साल बीते हैं। कोई भी सदस्य उसकी उपयोगिता के बाह्य स्तर की जो विशालता है उसके बारे में बता सकता है, लेकिन जब इस संस्था की स्थापना हुई तब मूलतः जो उद्देश्य रखे गए उसकी अवहेलना या मृतप्राय निष्फलता को सिद्ध भी वो करती। इस रहस्यशाला का उद्देश्य स्पष्ट है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी सही दिशा में आगे बढ़े और भविष्य के विकास के लिए कम से कम सदस्यों के बीच में भातृभाव की भावना वो पनपती रहे। अब उसी दौरान मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की ने घोषणा की कि महापुरुषों ने जो अनुभवहीन टीएस भातृत्व भावना के संदर्भ में अगर हम चाहेंगे, अगर इसको देखते रहेंगे तो वो दुर्बल रहेगी, जो कि संस्था के अस्तित्व के लिए वही मूल या नींवनुमा कारण है। जबकि टीएस के जो मूल उद्देश्य है वही आज भी है, थोड़ा बहुत अंतर है। और
आवाज आ रहा है आवाज। गो अहेड। ठीक है, ओके। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में जो अभी अंतर की बात बताई ना, तो उसके आगे उन्होंने उस उद्देश्य को काफी स्पष्ट किया है, और उसकी समय अवधि क्या रहेगी, किस तरह से वो सदस्य बन सकते हैं, उसके बारे में काफी अच्छा यहाँ पर हमें परिचय मिलता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में 2 साल तक कार्यरत जो भी रहता है, या संनिष्ठ जो विद्यार्थी की तरह एसोटेरिक विद्यालय में वो प्रवेश हेतु अगर आवेदन करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है, तो वह प्रवेश पाने के बाद उसके सदस्यों का जो कार्य है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को सक्रियता से आगे बढ़ाता है। उन्हें इसी बात पर आगे बढ़ाना होता है, और इस तरह थियोसॉफिकल सोसाइटी से एसोटेरिक स्कूल एक स्वतंत्र रूप से भी कार्यरत है। स्वतंत्र रूप से कार्यरत होने का मतलब यह हुआ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हैं वो एसोटेरिक स्कूल के साथ उसे कोई टकराव नहीं है। दोनों संस्थाएं होते हुए भी दोनों में एक अद्वितीय संबंध है, क्योंकि एक दूसरे के वे पूरक है। और जो भी सदस्य टीएस का बाह्य कार्य बड़ी ही निपुणता से करता है, उसे प्रथमदर्शी रूप से ईएस में जो प्रवेश पाने को कहा जाता है, तब यह निश्चित भी होता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के अस्तित्व पर ही यह गुड़ विद्या जो है या विद्यालय है वो भी निर्भर है। मतलब कि अभी बहुत बड़ा अच्छी रिमार्क बताई कि उन्होंने, अगर आप थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य नहीं रहते हैं तो आप एसोटेरिक स्कूल के भी सदस्य नहीं रहेंगे, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की है। तो मैडम ब्लेवेट्स्की ने जो टीएस की स्थापना करने के साथ, वो सह संस्थापक भी थी टीएस की, उन्होंने एसोटेरिक स्कूल की जो स्थापना की उसके बारे में कुछ रुचिकर बातें यहाँ पर उन्होंने हमें बताई है, जो काफी इसको जानने के लिए, अगर हम संजीदा है, अगर जानने की हमारे में इंतजारी है, अगर जो ईएस सभ्य आज हम देखते हैं कि 42 मेंबर्स आज इस प्लेटफॉर्म पर है, अगर इसमें से कोई अगर ईएस सभ्य नहीं है तो उसके लिए ये बात बड़ी ही गंभीरता वाली होगी, और उनको भी इससे काफी प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मुझे अंदाज है। सन 1888 में जब से ईएस की स्थापना हुई, तब से सक्रिय रूप से इस स्कूल के सदस्यों ने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाया, जो आज तक वर्तमान में भी जारी है। और इस तरह से अंतिम लाइन में बताता हूं, जिन महापुरुषों की प्रेरणा से टीएस की स्थापना की गई थी, उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप टीएस को भी स्थापित किया गया है। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हर्षवर्धन जी, आपने बहुत सटीक समय में किया। समय ना बिगाड़ते हुए शिंदे जी प्लीज आगे बढ़िए। और आपको खुशी होगी कि 42 नहीं, लगभग 47-50 के बीच में आंकड़ा जा रहा है, और यूट्यूब पर भी आज 15 लोग देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अपना मैसेज पहुंच रहा है सर। गो हेड सर। HPB founded. Am I audible? You are audible, loud and clear. Okay. I will see. Yes. HPB founded the ES at the behest of those spiritual teachers who also inspired the foundation of the TS. So who founded, as I said, I gave the names of the outer head. Who are the inner head then? And that is what she has made clear here. HPB founded the ES at the behest of those spiritual teachers who also inspired the foundation of the TS. So those are the masters who are looking after both ES and TS. So when we think of nature of the esoteric school in relation to the last point, why the masters founded this, the theosophical literature mentions humanity's elder brothers are the masters, and they are referred to be the adepts or the holy ones or the Mahatmas. Sometimes also
they are referred as the guardians of humanity. And who are the masters? Master is one who is known to take his pupil. So master becomes only when he has ability to take his disciples or pupils. And what are the requirements? Requirement for any potential member of the school has always been a genuine belief in their existence. So who can become the member? One who has a living faith in the unfoldment of consciousness, in the evolution that we have evolved from mineral kingdom to plant kingdom to animal kingdom to human kingdom, and evolution is not stopped. So logically also, there must be superhuman kingdom and there must be perfected beings, and these masters are the perfected living beings which are guiding and becoming the guardians of humanity. So if you have a living faith in such perfected living beings, then only you can imbibe certain nature of their consciousness in your consciousness, like love, compassion, helpfulness. All those qualities are the qualities of perfected being. And when you have living faith in those, then only those qualities can come and imbibe into your consciousness. So their existence should not be doubted. And therefore, also the possibility of developing a greater affinity with their consciousness. We have got much reverence to the Mahatmas. We read with this reverence the Mahatma letters. We give seriousness to their words and statements, contemplate on them regularly. So if you have a feeling of devotion to the masters and their work for humanity, which is an important element for many of the school members, it can be mentioned here that the ES is not some kind of temple for their worship. So we should not be a temple mentality. We can have a shrine room, we can have a separate room where we can gather, but we must avoid our temple mentality, not worshipping and not doing puja, etc., etc. So the temple mentality should be avoided. Although a feeling of devotion to the masters and their work for humanity is very important, but for many school members, they have such temple mentality. It can be mentioned here that the ES is not some kind of temple for their worship. So it is very important point we must remember. And it is also not a group of an elite group. It is a group of those people who have determined to purify themselves, determined to become fit to serve the humanity. And it is not an elite group. It is also not a separate religion. It is actually a religion of responsibility of purifying ourselves and become more and more unselfish day by day. Rather, it is a group of individuals who have chosen a particular way in which to make theosophy a living reality.
to make theosophy a living power in our daily life. And also, not only living power in our daily life, it must be a living power in the company of other students. So we should not be like, I love somebody and I hate others. No. If you love, you must love to all. It is a group of individuals who have chosen a particular way, in this way, to make theosophy a living reality in their life. And also around, in order to allow the fuller unfoldment of their unique inner nature and to be of greater service to the world. What is our unique inner nature? We are not our bodies, we are the souls. And soul is threefold, having power like willpower, intellectual power, and physical power. So all these strength, these are the unique nature. This is the unique nature of the soul. Everybody has got these powers. And with these powers, with our willpower, with our intellect and talent, and with our physical power, we must be a great servant of that light which comes from within. The ES is a school which helps to be in preparation for the spiritual path. So again, we have not yet found the path. Seek out the way. That is what in the Voice of the Silent says. So there needs to be in preparation for the spiritual path. There has to be some preparation. We should imbibe certain qualities which are given at the feet of the master, like discrimination, desirelessness, good conduct, and love. These are the requirements on the spiritual path. We are actually advised to study the books, certain books like At the Feet of the Master, Masters and the Path, A Key to Theosophy, and Ancient Wisdom. Because a student who wants to enter into the esoteric school of theosophy, he must know that he is connected, our microcosmos is connected with the macrocosmos. So human being as microcosmos has got 7 principles. And these 7 principles are in line with the universal 7 principles. So this, we must have knowledge of 7 principles, how these are connected, how human energy is same as that of cosmic energy, as J. Krishnamurti proclaimed. So that kind of study is required. And therefore, one must study this book, Ancient Wisdom. Doubts must be removed, and therefore one must study A Key to Theosophy. And there is a path to become a master. You are potentially a master. You are on the way to become a master. So you read that Masters and the Path book by C.W. Leadbeater. And the basic qualifications required to enter this school is at the feet of the master, where discrimination, desirelessness, good conduct, and love. These are the 4 qualifications are needed. And ES is a school which helps to be in preparation for such kind of spiritual path. And this path being an entrance to the narrow ancient gateway to the masters. So it is a narrow way. Again, we many times taught about the 7 portals. We must go through those 7 portals. Each portal has got its own key. So the wisdom, masters of the wisdom, humanity's great spiritual guardians. So all those perfected beings, they have taken this responsibility of human evolution, human regeneration. They are forming a guardian wall. 1 minute. Vikram's phone hai bagi. Guardian wall around the humanity.
So, the essential lifestyle of a member of the esoteric school is based upon careful self-responsibility, ahimsa, non-harming with respect to oneself and also with respect to other lives generally, and in all aspects of personal relationships, including morality. In a simple way, this is the divine wisdom, very nicely explained in many philosophies. And in a simple way, if it is not yours, then don't take it. That is the morality, naitikata. If it is not yours, don't take it. If it is not right, don't do it. If it is not true, don't say it. And if you don't know, be silent. These are the simple principles which need to be imbibed before, these are the conditions rather. Then only we can enter into the such school. So here it is carefully said, self-responsibility, ahimsa, non-harming with respect to oneself, other lives generally, and in all respects personal relationship, including morality. Among the various conditions of the school, members are therefore required to observe vegetarian diet, not to have tobacco in any form, not to smoke, not to drink alcohol, so that we can avoid toxicity in our body, and not to take any recreational drugs to have siddhis, etc. Any additional questions may be addressed during the process of further inquiry by the interested TS members. That is what voucher says to all of you. So the ES has expected of its members from the beginning a seriousness of purpose of life, along with a willingness to develop the qualities necessary for the path and to assimilate the teachings given in those books. Above all, it has encouraged them to seek for such knowledge without any desire for personal benefit. These principles remain relevant. Really, after joining the ES, we must become more and more impersonal. All that is personal needs to be avoided. And even it is said, personality need to be paralyzed. We must not give priority to the personality, but to the service of humanity. So when the school was formed, stress was laid on the essential practice of giving up superficial and inattentive habits of thought and become able or to enable an attitude of mind which would allow the unfoldment of intuition. So mind needs to be a learning mind. It is the learning and quiet mind can get some inspiration from the book, from the good lectures, and that inspiration gets converted into, as he goes on the path, into insight, and insight then may take a quantum jump to intuition. So we are aimed at intuition. Furthermore, trials of spatial nature were not to be sought. So here you are definitely tested. You are always watched. And you should not go what kind of test they are taking and like this. No. You be yourself. Becoming oneself and being yourself is wonderful
attitude need to be developed in this school. This general approach still applies today, along with the cultivation of self-awareness. It is the self-awareness is very important. And I like Krishnamurti's statements, because we are definitely greedy. Greed is there. But Krishnamurti asks, have you, with self-awareness, have you observed the greed? Have you allowed to flower that greed? So that inner flowering finishes that greed. That is the path one has to do with self-observation. Here we end, and there are many questions we can deal with, but let the, in other language, it can go ahead. This is only the half part of the book, and the half part will be in the next time. Now we'll listen to Marathi from Nandkumar Rautji, and then Hindi from Harshavadan. And then question answer you can write in the chat box right now. Thank you. धन्यवाद शिंदे सर. खूप चांगल्या पद्धतीने आम्हाला समजावून सांगितलं. आता आपण भाग 2 ला सुरुवात करू. थिओसॉफिकल साहित्यामध्ये मानवतेच्या गुरुजनांचा उल्लेख आहे, ज्यांना आपण कधी अडेप्ट म्हणतो, महात्मा म्हणतो, आणि कधी कधी मानवतेचे रक्षक देखील म्हटलं जाते. आणि ज्यांना महात्मा कोणाला म्हणायचं, मास्टर्स कोणाला म्हणायचं, की ते काही जण काही विद्यार्थ्यांना शिकवतात, प्युपिल, डिसायपल्स, त्यांना आपण मास्टर्स म्हणून ओळखले जातात. आणि शाळेच्या कोणत्याही पात्र सदस्यासाठी नेहमीच महात्मांच्या अस्तित्वावर खरा विश्वास असणे आवश्यक आहे. म्हणजे एसोटेरिक स्कूलची ही अटच आहे की तुम्हाला महात्म्यांच्या अस्तित्वावर विश्वास पाहिजे, आणि म्हणूनच त्यांच्या चेतनेशी अधिक आत्मीयता विकसित करण्यासाठी शक्यता असते त्याच्यामध्ये. आणि शिक्षकांप्रती भक्तीची भावना, महात्म्यांप्रती भक्तीची भावना आणि मानवतेसाठी त्यांचे कार्य हा या शाळेच्या अनेक सदस्यांसाठी एक महत्त्वाचा घटक जरी असला तरी येथे उल्लेख केले जाऊ शकते की एसोटेरिक स्कूल महात्म्यांच्या पूजेसाठी किंवा उच्चभ्रू गटासाठी, म्हणजे काही श्रीमंत स्ट्रॉंग लोक असतील त्यांच्या त्या गटासाठी हे काही एक प्रकारचे मंदिर नाही आहे, तसंच तो धर्मही नाही आहे. त्याऐवजी हा अशा व्यक्तींचा समूह आहे ज्यांनी त्यांच्या जीवनात थिओसॉफीला जिवंत वास्तव बनवण्यासाठी इतर विद्यार्थ्यांच्या सहवासात त्यांच्या अद्वितीय आंतरिक स्वरूपाचा पूर्ण उलगडा होण्यासाठी आणि अधिकाधिक मोठे होण्यासाठी आणि जगाची सेवा करण्यासाठी हा एक विशिष्ट मार्ग निवडला आहे. ही एक शाळा आहे जी आध्यात्मिक मार्गाची तयारी करण्यास मदत करते सदस्यांना, आध्यात्मिक मार्गाची. आणि प्रज्ञानाच्या मास्टरचे म्हणजे महात्म्यांचे, मास्टर ऑफ द विजडम, ते मानवतेचे महान आध्यात्मिक पालक सुद्धा आहे. आणि ते एक प्रकारचं त्यांच्याकडे पोहोचणे म्हणजे ते ही आध्यात्मिक साधना किंवा हा आध्यात्मिक मार्ग, या मार्गावरचे एक प्रकारचे ते एक प्राचीन प्रवेशद्वार आहे. म्हणजे तुम्हाला खूप मेहनत करावी लागेल. ही अशी शाळा आहे, आध्यात्मिक शाळा आहे की याच्यामध्ये पदोपदी तुम्हाला डिफिकल्टी येतीलच, परंतु त्या डिफिकल्टीला न घाबरता आपण नेटाने पुढे गेलो तर त्या प्राचीन प्रवेशद्वारामधून आपण महात्म्यांकडे पोहोचू शकतो.
गुड शाळेच्या सदस्यांची अत्यावश्यक जीवनशैली, गुड शाळेच्या सदस्यांची या इसोटेरिक स्कूल मध्ये जे सदस्य आहेत त्यांची जीवनशैली कशी असली पाहिजे की काळजीपूर्वक, आत्मजबाबदारी, अहिंसा हे स्वतः करता आणि सामान्यतः इतर जीवन आणि नैतिकतेसह वैयक्तिक संबंधाच्या सर्व पैलूवर ही शाळा आधारित आहे. शाळेच्या विविध परिस्थितीपैकी सदस्यांनी काही ठराविक गोष्टी पाळणे आवश्यक आहे. पथ्य आहे ते एक प्रकारचं की मग सदस्यांनी तुम्हाला सदस्यांनी शाकाहारी आहार पाळणे, धूम्रपान न करणे, मद्यपान न करणे आणि मनोरंजक औषधे न घेणे. मनोरंजक औषधे म्हणजे करमणुकीच्या उद्देशाने मानसिक स्थिती बदलणारी औषधे किंवा पदार्थ हे न घेणे. इच्छुक TS सदस्याद्वारे पुढील चौकशी प्रक्रियेदरम्यान कोणतेही अतिरिक्त प्रश्न संबोधित केले जाऊ शकतात. ES ही आपल्या सदस्यांकडून सुरुवातीपासूनच जीवनातील उद्देशाचे गांभीर्य, मार्गासाठी आवश्यक गुण विकसित करण्याची आणि दिलेली शिकवणी आत्मसात करण्याची इच्छा असण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजे इसोटेरिक स्कूलची काही अपेक्षा आहे की तुम्ही जीवनामध्ये जे उद्देश आहेत तुमचे थिओसॉफीचे, ESचे, ते गांभीर्याने घेतले पाहिजे, सिरियसली, सिन्सिअरली, आणि त्या मार्गासाठी आवश्यक व्हर्च्यूज, सद्गुण विकसित केले पाहिजेत आणि दिलेली जी टीचिंग आहे TSची ती आत्मसात करण्याची इच्छाही असली पाहिजे. अशा ह्या अपेक्षा ESच्या स्कूलच्या आहेत. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे वैयक्तिक फायद्याची इच्छा न ठेवता अशा ज्ञानाचा शोध घेण्यास त्यांना इसोटेरिक स्कूलने प्रोत्साहन दिलेले. ही तत्वे संबंधित राहतात. जेव्हा शाळेची स्थापना झाली, इसोटेरिक स्कूलची जेव्हा स्थापना झाली, तेव्हा विचारांच्या वरवरच्या आणि अविवेकी सवयी सोडून देण्याच्या अत्यावश्यक सरावावर भर देण्यात आला. म्हणजे जेव्हा जी स्थापना झाली तेव्हा आपल्या विचारांच्या वरवरच्या आणि अविवेकी सवयी हे सोडून दिल्या पाहिजे आणि त्याच्या प्रॅक्टिस केली पाहिजे, त्याचा सराव केला पाहिजे आणि त्या सरावावरच भर देण्यात आला की ज्यामुळे अंतर्ज्ञानाचा उलगडा होऊ शकेल, इन्साइट डेव्हलप होऊ शकेल व अशी मनाची वृत्ती सक्षम राहील. शिवाय दैनंदिन जीवनातील परिस्थितीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत विशिष्ट स्वरूपाच्या चाचण्यांचा शोध घेण्याचा उद्देश नव्हता. हा सामान्य दृष्टिकोन आज आत्मजागरूकता वाढण्यासाठी हा लागू होतो. अशा पद्धतीने आज आपण इसोटेरिक स्कूल बद्दल जे गैरसमज होते ते काढले आणि त्या स्कूल ही किती सिन्सिअरली आणि गांभीर्याने यातलं टीचिंग घ्यावायचं आहे याबद्दल आपण माहिती पाहिली. तर आजचा टॉपिक इथे संपला. थँक्यू व्हेरी मच. थैंक धन्यवाद. जी मराठी में बहुत सुंदर तरीके से किया. हर्षवर्धन जी हिंदी के लिए आप आमंत्रित हैं, आइए. जो भी प्रश्न लिखना चाहता है वो लिख सकता है पीछे. धन्यवाद. Yes, now it is okay with my audio. Yeah. बहुत ही सुंदर रूप से आपने मराठी में जो बताया तो काफी इतना समझ में आ गया. कुछ ऐसी बातें ES में होती है जो हमें एक ऐसी पटल पर लाकर रख देती है कि जिसे हम इसी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं तो हमें इतना आनंद मिलता है कि जिसका वर्णन कर पाना, जैसे कि हम कहीं गहरे समंदर में चले गए हो और वहां पर
जो हमें अनुभूति होती है उसका तो कोई सानी नहीं है। जी एसोटेरिक स्कूल का जो दायरा है उसके बारे में उन्होंने सेकंड पार्ट में बहुत इतना रोचक तरीके से बताया है। एक तो मानवता के लिए जो कार्य करने वाले हैं, जिसे हम मनुष्य के अग्रज मानते हैं, उसे हम एडेप्ट्स कहते हैं, पवित्र आत्माएं हैं, महात्मा कहते हैं। वे कभी कभी मानव जात के रक्षक भी हैं, और जो अपने शिष्यों को चुनते हैं, जो भी सही सदस्य होता है उससे उनके अस्तित्व में काफी सच्चा विश्वास होता है। इसी कारण उनकी चेतना के साथ कई हद तक खुद की चेतना का विस्तार करके एकत्व का अनुभव करते हैं। मैंने ये ऑरा हमारे राधा जी के मुखमंडल पर देखा है, अनुभव किया है। जब वे बात करती थी एसोटेरिक स्कूल के हमारे अभ्यास वर्गों में, बड़ी गहनता से वो बात करती। सभ्यों के लिए वे जो भी मानव के विकास का कार्य इंगित करते हैं, महात्मा, उसका काफी महत्व होता है। यहाँ यह बताना भी उचित है कि ये नहीं, जैसे हम टेम्पल जाते हैं ऐसा कोई मंदिर नहीं, या कोई उच्चार के मतलब ये कोई धर्म की ऐसी बात भी नहीं है। ये ब्रह्म विद्या को अपने जीवन में यथोचित एक जीवन क्रिया है, इसे स्कूल कहते हैं। ऐसे शिष्यों के साथ रहकर संपूर्णतया अंदरूनी स्वभाव को जानने की ये कोशिश है, जिससे बड़ी मात्रा में बाह्य जगत में सेवा की जा सके। आध्यात्मिक राह बनाने में यह गूढ़ विद्यालय मददरूप होता है। गूढ़ शब्द आप रहस्य को, या ऐसे दो शब्द है उसको आप समझ सकते हैं। मानव जाति के उत्कृष्ट आध्यात्मिक रक्षकों का, उनके साथ रहकर जो हम पुरानी प्रज्ञा का अभ्यास करके अगर उसके द्वार खोलने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी ही संकरी जगह से प्रवेश मिलता है। इसमें जो बड़ी बात है, कबीर जी की बात यहाँ पर आ गई। खैर वो सब्जेक्ट विषय से विषयांतर नहीं करना है। गूढ़ विद्यालय के सदस्य के जीवन में स्वजागृति, जवाबदेही, अहिंसा और औरों के प्रति प्रेम रखना स्वाभाविक बन जाता है। कई लोगों के जीवन में नैतिकता का भी अहम यानी उच्च स्थान बना रहता है। इस गूढ़ विद्यालय के शिष्यों की आचार संहिता में, ये आचार संहिता बड़ी अजीब चीज है। आप, मुझे तो फिर बाद में ये काफी चर्चास्पद हुआ था, लेकिन ये आचार संहिता होनी चाहिए। उसमें शाकाहारी भोजन महत्वपूर्ण है, तंबाकू गुटखा का व्यसन ना हो, शराब का सेवन ना करना हो, और ऐसी नशीली दवाइयों से भी बचना होता है। अगर डॉक्टर बताए कि ये दवाई लेनी है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। जो भी इस स्कूल में सदस्य बनना चाहता हो उनके लिए अधिक जानकारी जो बताते हैं, ऐसे प्रश्नों को भी उनमें समझाया जा सकता है। शुरू से ही ईएस में जो भी सदस्य जुड़ता है, उससे जीवन के ध्येय को सामने रखकर गंभीर रूप से जो भी उच्च क्षमताएं हैं उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध किया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। और उसमें जो भी उपदेश प्राप्त होते हैं उनको जीवन में स्थापित करना होता है, यानी जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। ये कोई ऐसी बात नहीं है एसोटेरिक ऐसा अभ्यास है कि जो आपको अभ्यास करने के बाद नौकरी ना मिले। उसके उपरांत उन्हें कोई भी स्वार्थपूर्ण लाभ यापन की लालच से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह सभी सिद्धांतों का अमल होना ही है। जब गूढ़ विद्या की स्थापना की गई थी, तब से ऊपरी स्तर पर, यानी सुपरफ्लुअस जो बात बताई, ऊपरी स्तर पर जो भी निठल्ले विचार उठते हैं उनको दूर रखने का अभ्यास कराते थे, जिसके कारण ऐसा मन तैयार हो जो प्रज्ञा के लिए ऐसी कोई तो लेकर कोई प्रयोग नहीं किए थे, क्योंकि यह तो यूं ही सामान्य जिंदगी जीने में जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां होती है ऐसा ही मालूम होता है। लेकिन सामान्यतः आज भी स्व जागृति को पाने के लिए ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरना ही होता है।
अब आगे एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि ईएस विद्यालय क्या नहीं करता, मतलब कि ये जो स्कूल है हमारा उसे क्या नहीं करना नहीं है सर हाँ जी। वो नेक्स्ट टाइम के लिए है। अच्छा ओके हाँ सर। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, ये टाइम के लिए है। जी तो यहाँ तक मैंने अपनी बात बताई है, इसको समाप्त किया जाए और बाद में कुछ बातें बतानी है मुझे, वो मैं उसके बाद बताऊंगा। और इसके साथ मैं आभारी हूँ शिंदे जी का, हमारे राउत साहब का भी, क्योंकि काफी मुझे मराठी तो ऐसे पता चल जाता है लेकिन सुनने में बड़ा मजा आया। बस जी, आप बने रहिए, आप स्पॉटलाइट में हैं। तीनों वक्ता स्पॉटलाइट में हैं और मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में किसी ने कोई प्रश्न पूछा है। नहीं, सभी ने तारीफ की है, लेकिन अभी मंच यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं करीब 41 लोग हैं, तो अगर वे चाहें तो उसमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है अपने को अनम्यूट कर मैं उसे वो कर लूँगा, हाईलाइट करूँगा। और अगर कोई किसी को प्रश्न ना पूछना हो तो फिर हम वापस से मुखातिब होंगे हमारे आज के वक्ता को कि भाई उन्हें कुछ कहना है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार शिंदे साहब, जिसको हमने वर्कर्स ट्रेनिंग कैंप में और ईएसपी का ट्रेनिंग कैंप था उसमें उसके साथ हमने वो ट्रेनिंग लिया, पढ़ा था। वो सर आज हम त्रिवेणी के सामने आए, वो हर बार त्रिवेणी में एक्सपर्ट के रूप में थे, लेकिन आज टीचर के रूप में आए तो बहुत प्रसन्नता हुई। और ये गूढ़ विषय को गूढ़ तरीके से हमको समझाया गया। नंद कुमार जी को भी अभिनंदन और आभार। और हमारे जीटीएफ के प्रेसिडेंट और नेशनल लेक्चरर, जो कि एक सप्ताह के बाद सूरत कामरेज में जीटीएफ का अधिवेशन हो रहा है और उसमें उसमें वो प्रस्तुत होगा, और इसकी पूर्व पूर्व संध्या पर वो ये त्रिवेणी में आए, उसको सुनते भी बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत सालों से वो भी ईएसटी का सदस्य है, मैं भी ईएसटी में प्लेज मेंबर हूँ। तो ये ईएसटी के बारे में जो आचार संहिता की बात है वो बड़ी रोचक है। और मैं तो ये मानता हूँ कि पीएस के सदस्यों को भी आचार संहिता होनी चाहिए, क्योंकि वो मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना, ये सब मेंबर के लिए वो एक जरूरी बात है। जी और जी ये स्पीकर सदस्य, हाँ, बड़ी रोचक तरीके के समझाया गया। सबका खूब खूब आभार और अभिनंदन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई कुछ कहना चाहता हो तो कहें। उदय भाई धन्यवाद। यस, जितेंद्र संपत जी भी हैं। तीनों वक्ताओं का धन्यवाद, बहुत सुंदरता से समझाया तीनों ने ही। और शिंदे जी को तो हम क्या ही कह सकते हैं। थैंक यू कंचना जी। गणेश कुमार जी हैं। गणेश कुमार जी हैं। गणेश कुमार जी अपना वीडियो ऑन करिए सर। Thank you so much. या जी, और अन्य कोई कुछ कहना चाह रहे हो? प्रीतम जी हैं, सुता जी हैं। हाँ, Yeah, good evening, sir. Good evening to all. एंड डेफिनेटली आज सिंधे जी का था, इसलिए मैं कहीं बाहर थी तो भाग के आके ज्वाइन किया कि सिंधे जी का है। एंड जो टॉपिक था एसोटेरिक के ऊपर, ये मुझे समझना था। तो सिंधे सर, आई हैव वन क्वेश्चन एक्चुअली। There is certain rules and some points are there ki if you want to be a member of esoteric society, you must have follow these things like vegetarian, you must be vegetarian, then you don't have to smoke, alcoholic, etc, etc. So, but I think the main point should be there that you must be unselfish and and jealousy, because I have seen, I'm sorry to say, but I have seen many of the esoteric members, right? Although they are the esoteric members from since a long years, but the main thing, the unselfishness and that jealousy, that is there with them. So Yes. Smita ji, you have pointed out rightly, because we all are imperfect. We have all these negatives within us.
and we are told and advised that be careful that when you join the ES in such a satsanga, then these negatives come to the surface. And if you are not pure, in the sense, not having a good food, if you are intoxicating with alcohol and tobacco and even the animal meat, etc., then they become more strong and they will trouble you. And not only they trouble you, but because of you, the whole satsanga gets polluted. This is quite true. It is our responsibility. This is what responsibility of one's to whether to join or not to join. Because those negative forces come to the surface, and if you are not pure, you will be definitely affected. Some people, they get stroke or many things happen. Of course, stroke comes late in the old age. That is different. But even many times it has happened to many members of the ES in history also. We refer them in the Mahatma letters. So many people, they entered and got affected. So this is a great responsibility, your own responsibility. If you are determined, you can enter. There is no any compulsion. But if you want to come, these are the conditions. If you want to enter this temple in that sense, you have to put your shoes outside. Means you must put your personality outside. Yes. That is what it is aimed at. Sampath what? Hello. This is Sampath ji. Hello. Yeah. Yeah. Sampath ji, namaste. Namaste. I want to ask, there are two things yes, please. that I think you might have omitted. One is that should the candidate to apply for ES should not have a guru. Yeah. First of all. And the second one, should he belong to any religion, or he has to drop his religion? So in the next section, we are dealing with Sampath ji, what the ES must do and what must not do. In that headings, we can deal with that. And what you said, it is correct. He should not belong to any other religion, not religion. He should not accept any other's path, because then you get disturbed yourselves. If you are determined to follow the ES, then follow it. Otherwise, no compulsion. Yeah. Any other question, Pritam ji or Shiva? Hello. Yeah. Hello. Ramesh ji, please. Yes. Yes, sir. Ramesh ji, video on. First of all, am I audible, sir? Yeah, you are audible. Please video on कीजिए तो मैं आपको यहाँ रखूँ. हाँ. अरे मेरा तो वो चला जाता है. अच्छा कोई बात नहीं, बोलिए सर. Go ahead. Hello. You are audible, sir. Go ahead. Yes, sir. First of all, I congratulate all the three speakers. Particularly, I was very eager to hear Sanjay ji साहब, because अरे वो इसलिए कि ये सब्जेक्ट में वो उन्होंने बहुत साल गुजारे हैं, तो उसका थीम क्या है वो भी मालूम पड़े. और एक बात, ये अच्छी बात मालूम पड़ी कि ये इट इज ए सीक्रेट, नॉट सीक्रेट बट प्राइवेट. दैट इज ए वेरी गुड थिंग. अभी उसमें एक मेरा क्वेश्चन है कि 2 साल तक क्वेश्चन नहीं करने का ऐसा कुछ बोला जाता था, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्वेश्चन नहीं करना यानी you must contemplate yourself. Who asks the question? It is the lower mind which is confused. It is the lower mind which always asks questions. And immediately it wants answers from others. We are advised to ask ourselves, examine ourselves, and contemplate on it for a few days. Then you will find the answer. Because problem is with you. And as Krishnamurti said, problem has got answer in its own problem. So that is how self-inquiry is very important. So not to ask
Who will ask? Only those are imperfect. Those are not yet determined in this way. They will ask. Otherwise, keep with that question. Be with the questions. That is what they always, Krishnamurti says. Be with the question. Then you will get the answer either in dream or any hint may come. And then you won't ask that question. Yes. A disciple came to master and asked, everybody has a Buddha nature. And do I have Buddha nature? Then master said, you don't have Buddha nature. How is that, master? Everything, even stone, plants, animals, all of them have Buddha nature. How is that I am not having Buddha nature? And he replied, because you ask. You want to know. You ask. Therefore, you don't have Buddha nature. So Buddha nature never asks. In that subtle level, we have to reach. Yes, yes, yes. Okay, now प्रीतम कल्याणकर जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने हाथ ऊंचा किया था. Good evening, all. Good evening. Good evening, Pritham. Yes. Yes. Thanks for Shinde sir ji, Harshavadan ji, and Nandakumar ji for inspirational talk. English, Marathi, and Hindi, and it is revised very well, and it is fit in my mind now. Yes. Pritham Kalyankar has started a center in Goa. Oh, yeah. And he's always here, sir. Almost every meeting. Thank you, Pritham ji. Yes. And one question is there from my side. I'm very passionate about meditation things, and what is the role of meditation in our society, and how it is connected, and when and where, how to take meditation in lodge centers or any functions. Many people are interested in meditation. Meditation has become so common now, and everybody wants to sit for meditation. And this meditation, it is sure that meditation is necessary. Without meditation, there cannot be self-knowledge. There cannot be self-realization. So meditation must be there. And we have discipline of meditation, discipline of study, and discipline of selfless service. This is our, what we say, especially study, meditation, and selfless service is our discipline. And we don't have any method of meditation. We are, a freedom of thought is there. And meditation, what does the meditation? Meditation makes us to be free from our thoughts. Ending of thought is the final result of meditation. And therefore, we are asked to watch our thoughts. Because of these thoughts, we talk. Human being has got the language. He is able to talk. And because of thought, the words, they come. And because if the words are good, they turn into right action. If the words are not good, they are considered as the wrong action. So words become action. And like this, it follows the strain or stream. That action becomes habit, then habit becomes character. So character building is very important, and to observe your thought and culture of thought is nothing but the kind of awareness of our own thoughts. And that is what the meditation is. Meditation is not different. You must see how many times you are selfish, how many times you are unselfish, how many times you are projecting yourselves, how many times you want to become famous. All these things, they come amplify when you come in the esoteric school of theosophy. They actually, Ganesh Kumar told now in the chat that it gets amplified. And we must be careful about that. That is what meditation. We are not teaching any kind of meditation. Freedom is there. Because meditation is to our mind. And that intellect
becomes more and more sharp and penetrating and get converted into intelligence, or what we say, intuition. So we are aimed at intuition. And those who have intuition, they never say what they have got, what they have seen. So that is what meditation finally leads. One who knows that I know these things, that is, after all, he must be knowing, but still he is immature in that case. So we are not teaching any kind of meditation. We are not after any siddhis. Thank you, sir. And I think Very nice, sir. done a full thing there. Sir, would you like to explain yourself, the example which you have given of amplifier? Ganesh ji? Ganesh ji? Ganesh ji. Ganesh Kumar. Hello. Sorry. Yeah, you have given an example of No. amplifying. Explain that. I read in the chat. You see, if you have got a recording which has got some noise as well as the signal, singing, music, when you try to amplify it, the noise doesn't go out. Along with the noise, the music also amplified. So in the same way, whatever qualities we have, I mean, as Shinde ji was mentioning, as when one comes to that one, both our good qualities as well as the unwanted qualities, both of them, they exhibit, they come out. So before we join the ES, probably any spiritual organization, I think most of the spiritual practices, they insist upon developing the good qualities and getting rid of the bad things, because even the bad qualities will come out at a higher level. Yes. Thank you. Yes, Harshvadan ji, if you like to put anything more forward, Nandkumar ji or Shinde ji, then we'll go for the closing. रोहित जी, आप अंतरिक्ष में ओम के ऊपर बैठे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, थैंक यू. हाँ जी, बोलिए सर. अनम्यूट कर लीजिए अश्विन भाई, इफ यू विश टू से समथिंग. और आई थिंक अर्चना जी, ईश्वर जी, तो आप समाप्त. हाँ जी, बोलिए. Taral ji, one sentence I can say, and I'm very happy to listen from Shinde sir, and he was my professor in my BSc time for first and second year. And he is a very perfect professor for us, and he taught us genetics that time. And I got full marks in that subject. That's good. Okay. Nice memories. Yes, Arjunan bhai, please go ahead and then we'll say. Yes, certain things that we have to discuss next time. That will be speciality for the people or the members of the Theosophical Society to ponder deeper into this particular school. Those who are not the members should have this guidance and a kind of understanding why to join ES. That I must have a kind of emphatic announcement for that, because in Gujarat also, once upon a time, there were the members in great numbers. The members of the TS were the same of the numbers of the ES also. So that was the historical kind of record, that everybody was the member of ES school. Now, deterioration goes on sometimes. It lags sometimes, because we know that it is the particular timing that goes on with our results and our records. So next time when we take this, we will go deeper into certain questions, and also I will contact Shinde ji and we will discuss whether we can have those questions here in the program, or we should have, right? Oh yes, because if the questions and answers are permissible, so far as ES discipline is required, so we will take up like that. So that is what I understand. Thank you. तो हमें ये तीनों त्रिवेणी वक्ता जो है, इनका बहुत लाभ अगले उसमें होने वाला है. So don't miss the second edition of Esoteric
स्कूल ऑफ थियोसॉफी। और अब हम समापन की ओर चलते हैं। तो मेरा निवेदन है, राउत जी आपको तो कुछ नहीं कहना है? सॉरी मैं नहीं 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 नहीं, अभी कुछ नहीं। ये अर्चना जी और अतुल जी प्लीज। पहले तो मैं तीनों वक्ताओं को थैंक यू कह दूं। काफी सारे जो मन में विचार थे वो क्लियर हुए और अगली तरफ के लिए मैं इंतजार करूंगी। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्व्यार्प सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। Thank you, everybody, and good night. Thank you. Thank you. And NANDKUMAR ji, Shinde ji. Yeah, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you to all the speakers. लोग एसोटेरिक के बारे में जानना चाहते हैं, ये मैसेज में भी था। और आज करीब करीब 50 लोग के आसपास 49-50 के बीच में आंकड़ा रहा जूम पर। लेकिन 10-15 लोग कंटिन्यूस वीडियो उस पे लाइव स्ट्रीम पर भी देख रहे थे,
यूट्यूब पर। तो थैंक यू सो मच, और हम शायद इसकी और शोध जैसा